Alright, so we talked about कि सर्वे प्रोसेस के अंदर पहला जो काम होता है that is about defining the research objectives, जो कि independently of any research method हम लोग definitely at the start of our research करते हैं. तो even with the survey method हमने पहला जो starting point है that is कि you establish your research objectives and or research questions. So in survey research method जो next steps and that is about designing of the survey. Okay, तो designing of the survey comes in the planning phase जिसके अंदर ये चारों चीज़ें शामिल होती हैं. That is you have to choose a collection mode or sampling strategy आपने डिफाइन करनी होती है. एंड क्वेश्चनर जो आपने इस्तेमाल करना होता है वो या तो बनाना होता है या अडेप्ट करना होता है या अडॉप्ट करना होता है और उसे प्री टेस्ट करना होता है. In these slides we will when we talk about survey design तो हम उसके अंदर ये तीन चीज़ें लेके आएंगे: collection mode and sampling frame and sampling strategy. And why is that so? क्योंकि questionnaire construction especially in fields जहाँ पर किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने से पहले से ही एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर्स बने ना हो, दैट इन इटसेल्फ इज अ लॉन्ग प्रोसेस. और वो बड़ा it's a long and it's an important process and that in itself is a new research. तो इस वजह से will in our survey design हम पहले इन तीन चीज़ों की बात करेंगे and only then we'll talk about questionnaire construction and pre-test, although it is part of the planning and the survey design. So let's start it with the choosing of the collection mode in survey design. अच्छा, when we talk about design survey तो उसके अंदर collection mode के अंदर दो चीज़ें होती हैं. Number one is किस टाइप का डिज़ाइन हम लोग सर्वे करना चाह रहे हैं और दूसरा हम इसको एडमिनिस्टर कैसे करेंगे. हाउ वी विल बी कंडक्टिंग द सर्वे. प्लानिंग में ही यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट कि आपने कैसे उसे कंडक्ट करना है और आप उसके कौन सा आउट ऑफ टू डिज़ाइन टाइप्स आपने कौन सी वाली जो है ना चूज़ करनी है. और दो जो आपकी टाइप ऑफ डिज़ाइन सर्वे डिज़ाइन है दैट इज आइदर योर सर्वे कैन बी क्रॉस सेक्शनल इन नेचर और इट कैन बी एज लॉन्गिट्यूडनल. तो एज द नेम शोज क्रॉस सेक्शनल सर्वेज कौन से होते हैं जो कि वन स्नैपशॉट या वन पॉइंट इन टाइम you try to gather information on a population regarding a particular phenomenon that you're researching. So किसी भी single point in time में whenever you try survey from a sample drawn from a particular population, तो आपका cross sectional in nature होगा क्योंकि वो आपको सिर्फ at that point in time relevant जो information देगा. So example could be maybe your research objective is to understand the feelings or maybe the opinions or the expectations of the parents when it comes to internet filtering. ठीक है, तो आपका if your survey design is of cross sectional in nature तो आप एक पॉइंट इन टाइम में अपना सर्वे कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे. दैट इज फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस मे बी मार्च 2010 और जो फाइंडिंग्स होंगी ऑफ दैट सर्वे ऑफ दैट रिसर्च क्वेश्चन वो और उस टाइम फ्रेम के अराउंड जो है ना वो उस टाइम फ्रेम को डिपेंड कर रहा होगा. मे बी इफ वी somebody else, if you're referring to this study के internet filtering से relevant parents की feeling क्या थी and that survey was conducted in 2010 तो वो study 2010 से relevant आपको जो है ना information या फिर findings जो है ना वो दे रही होगी. So maybe if somebody wants कि वो बिल्कुल latest इस phenomena को understand कर सके तो another cross-sectional survey has to be conducted to make it relevant to the current scenarios as of 2023. अच्छा, तो yes, the cross-sectional surveys are they give you information about the percentages and frequencies and severity of a condition or a characteristic. लेकिन cross-sectional surveys can also be used in order to understand or determine the relationship between two factors or two variables. Maybe इसी सर्वे को अगर the objective would have been कि to find the relationship between the religiousness of the parents कि parents कितने religious हैं
are they more Islamic or less Islamic, or are they modern Muslims? तो क्या उनकी feeling, you know, as per internet filtering से relevant जो feelings या attitudes या उनके opinions हैं, उनके दरम्यान relationship है या नहीं है? क्या ज़्यादा religious जो parents हैं वो internet filtering को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, right? So yes, a cross-sectional survey can also tell you, it can be also explanatory in nature, where you're trying to test hypothesis or trying to find out relationship between variables. अच्छा, जो second type of design survey है, that is longitudinal. So as the name shows, in contrast to cross-sectional survey, जो longitudinal surveys हैं, they gather data over a period of time. यानी कि आपने सर्वे सिर्फ एक दफ़ा नहीं किया, बल्कि multiple times आपने जो है ना same survey conduct किया. तो this allows the researcher, जो longitudinal survey होते हैं, they allow the researcher to analyze the changes. तो देखें, for example, अगर आपने सिर्फ one point in time किसी phenomena को understand कर लिया, you only see a snapshot of that. कि 2010 में, March 2010 में parents की feeling ये थी about internet filtering, but they can change. They are prone to changes as per the environment जिस तरह change होता है. As time guzarta hai, so they might form different opinions over the passage of time. So the cross-sectional surveys do not allow you to analyze those changes because you do not have enough data points in terms of कि आपने multiple snapshot में जो है ना उस data को collect किया. So this longitudinal surveys allows you to analyze changing in a population about a particular phenomena that you're understanding, and maybe you can describe it or explain it कि अगर trend up जा रहा है, यानी कि in a longitudinal survey, if the feelings are being changed, what could be the reasons of those feelings? अच्छा, तो in this case the longitudinal surveys based on your motives or how you conduct them are of three main types, जो कि क्या है? Number one, you could have a longitudinal survey that could be a trend study. You could have a longitudinal survey that could be a cohort study, or you could have a longitudinal survey that is a panel study. So depending upon how you sample or what your objectives are or what you're trying to understand, your longitudinal study could be trend, cohort, or a panel study. So first we'll talk about a trend study. The trend study क्या होती है? Whenever you do a longitudinal survey, लेकिन आपका population तो same है ही है, otherwise it won't be a longitudinal survey if your population isn't same. लेकिन इसके साथ साथ आपका sample भी same है. So you have trend study focus on a particular population which is sampled and scrutinized repeatedly. Same sample same population के अंदर आप multiple जो है ना sample करते हो, लेकिन जो आपके लोग हैं उन sample में वो सेम नहीं होता है, राइट? योर सैंपल जो है ना वो सेम पॉपुलेशन का होता है, लेकिन जो सैंपल के अंदर जो लोग मौजूद हैं दे आर डिफरेंट. एंड ट्रेंड स्टडी they can be conducted over a long period of time, and they are comparatively easy compared to the other two types, cohort and panel study. Why is that so? Because किसी भी phenomena का trend देखने के लिए it's not important कि एक ही researcher हो या एक ही project हो जिसके अंदर you're carrying out a trend study. You can have a trend study of different research projects, and which can where the data is coming from different research projects, or the data is being gathered by different researchers. So that also allows the researcher कि अगर वो अपनी study करने जा रहे हैं and there's a previous data available on the same phenomena of the same population, so even that researcher can use that data from this several studies that have been conducted previously and and show a trend. So an example could be maybe you're interested in understanding okay, what was the percentage of librarians working at RIFA International University जिन्होंने इंटरनेट के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स को जो है ना रेफरेंस क्वेश्चन के जवाब दिए हैं. तो this is your objective. So
for a trend study what you're doing is ईयर में 3 दफ़ा आपने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरियंस हैं उनसे डाटा गैदर कर लिया, उनसे सर्वे करवा लिया, मे बी इन जनवरी में, and then the second survey that you conducted in June or July, and the third survey you conducted in December. So this is a trend study. What makes us a trend study is that Rifa International University might have multiple campuses, multiple libraries. So आपने क्या किया, जनवरी में गए तो I-14 की लाइब्रेरियन से पूछ लिया, जून जुलाई में गए तो you went to फैसलाबाद लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन से पूछ लिया, and maybe in December आप गए तो you conducted survey on the librarians जो कि लाहौर में की libraries में काम करते हैं. So see that the sample is the same, that is librarians working in Rifa International University, but here the people are different, क्योंकि पहली में आप I-14 के librarians ले रहे हो, दूसरी जो आपने सर्वे किया, दूसरी बार जो सर्वे किया वो आप फैसलाबाद के लाइब्रेरियन से ले रहे हो, और तीसरी दफ़ा जब आपने सर्वे किया तो आप लाहौर के लाइब्रेरियन से ले रहे हो. सो दिस इज़ हाउ अ ट्रेंड स्टडी लुक्स लाइक. सेकेंड जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है, दैट इज़ कोहॉर्ट स्टडी. कोहॉर्ट स्टडी भी सेम ही होती हैं टू अ ट्रेंड स्टडी. व्हाई? बिकॉज वो भी फोकस करती हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन और ऑन द सेम सैम्पल, ठीक है, जो कि यू स्टडी मोर देन वंस, लेकिन उनका फोकस डिफरेंट होता है. व्हाई? एज अ नेम शोज, कोहॉर्ट, your population is the same and your sample is the same, but while you're sampling you actually आप पहले से ये cohort identify कर लेते हो, and every time you sample it, every time you conduct a survey, you sample from that cohort. Example ले लेते हैं so that you understand it a little bit better. A cohort study could be कि आपने सैम्पल किया 2010 के ग्रेजुएट्स ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी about their attitudes regarding cyberbullying, ठीक है. For it to become a cohort study, the next time you sample it, you sample the same graduates of 2010 class, और आप study any further changes करोगे. इसी तरह जब आपने थर्ड टाइम उसको सैंपल किया तो अगेन यू विल सैंपल दिस कोहॉर्ट ऑफ 2010 रिफा ग्रेजुएट्स in order to understand their attitudes towards cyberbullying, ठीक है. तो this is what a cohort is. cohort क्या है यहाँ पर है, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिफा के, लेकिन जो आपने कोहॉर्ट उठाया वो 2010 के ग्रेजुएट्स हैं. नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर आपके यही this cohort study will become a trend study अगर आप 2010 ग्रेजुएट की बजाय 2014 के ग्रेजुएट को जो है ना सर्वे कर लें. First time you survey 2010 graduate, second time you survey 2014 graduate, third time you survey some 2015 graduates. Now सैंपल आपका सेम है, पॉपुलेशन आपकी सेम है, लेकिन आपने कोई कोहॉर्ट नहीं बनाया हुआ. आप उस पूरे सैंपल में से जो है ना, उस पूरी पॉपुलेशन के सैंपल में से उठा रहे हो. एन एग्जांपल कुड बी ऑफ कोहॉर्ट रिगार्डिंग द लाइब्रेरी इज कि पहले आपने जो ट्रेंड स्टडी की थी दैट वाज रिगार्डिंग द लाइब्रेरियंस एट रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. कोहॉर्ट वो कब बनेगी? जब आप एक कोहॉर्ट उठा लें उसमें I-14 के लाइब्रेरियन से. So see this, maybe there are 20 librarians working at I-14. तो आप जनवरी में जब आपने सर्वे किया तो आप I-14 में ही गए and you sampled पहला, दूसरा, तीसरा लाइब्रेरियन, उससे सर्वे करवा दिया. अच्छा, फिर दोबारा for it to be a cohort study आप दोबारा जून और जुलाई में गए तो again you approached the same cohort, that is librarians that are working at I-14 libraries. तो वहाँ पर आपने डिफरेंट लोगों से उसी कोहॉर्ट के डिफरेंट लोगों से जो है ना, डिफरेंट लाइब्रेरियन से सर्वे करवा लिया. एंड इन दिसंबर अगेन यू अप्रोच द कोहॉर्ट ऑफ I-14 librarians and you surveyed it again, maybe with different people. So this is how trend study and cohort study differ. In trend study के अंदर आप कोई
आपका सैम्पल सेम होता है लेकिन लोग डिफरेंट होते हैं. एंड कोहॉर्ट स्टडी आप उस सैम्पल के अंदर से एक कोहॉर्ट उठा लेते हो और वो कोहॉर्ट सेम रहता है फॉर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन या सर्वे डाटा कलेक्शन. Now coming to the third type of longitudinal survey, वो है panel studies. तो panel studies are, they allow you to, they allow the researcher to understand the change and a phenomena at a more deeper or a more specific level. Why? Because panel study allow the researcher to use the same sample and same people in that sample. ठीक है, तो that is how it's different from trend and cohort study. कि trend and cohort study में आपका sample जो है same होता है लेकिन लोग different होते हैं. लेकिन in a panel study आपका sample भी same है और लोग भी same है. That means in multiple longitudinal panel study जो आप कर रहे हो, तो पहली दफ़ा जो आपने सर्वे किया तब भी if you surveyed 10 people, तो सेकेंड दफ़ा आप सर्वे करने जाओगे तो तब भी आप उन्हीं 10 लोगों से ही पूछोगे. And then it will constitute the panel study. If you're not doing that, then it could either be a cohort or a trend study, but not a panel. Panel study में लोग भी same होने चाहिए throughout multiple point in time of data collection in survey-based research. तो जो sample हम लोग लेते हैं, जो the same type of people that we take in our study, उसको हम लोग panel कहते हैं, right? तो an example could be कि आपने एक panel आपने select किया, sample select किया for undergraduate students of first semester, और आपने उनसे पूछा कि what is their library usage, relevant उनकी frequency या attitude क्या है. And then a year after, when you're doing a panel study, again you will go and ask the undergraduate student of first semester, or first semester में भी वही वाले student जो पहली दफ़ा आपने survey किए थे, you have to ask again the same students about their library usage. ठीक है, and the third time when you survey, so again it has to be those same first semester undergraduate students जो कि आपने पहली दफ़ा survey किया था, दूसरी दफ़ा survey किया था, and now on the third time you're again going to approach the same students. Achha, panel studies, they are very useful. Why? Because they yield very specific results. Because your sample जो लोग हैं जिनके ऊपर आपने data collect किया है, जिन लोगों का आपने data collect किया है, they are overall the same. And so any changes in the patterns or any changes in the trends or any changes in the जो phenomena under investigation है, that will be very specific and that will be true क्योंकि आपके जो sample है वो same है. लेकिन the flip side of the panel studies is that they are difficult to conduct, और उसकी दो reason है. Number one, as the name shows, because you're conducted surveys multiple time, they tend to be expensive. तो वो आपकी cohort study भी expensive है, but panel studies are more expensive क्योंकि you have to approach the same people multiple times. And second, another flip side is the iteration rate. Iteration rate क्या होता है कि when for instance कि पहली दफ़ा आपने panel study की तो आपके पास जो है ना 20 लोगों का sample आया, just for the sake of the argument and for understanding, although surveys में आपका sample it should be greater than that. तो 20 for instance आपने 20 लोगों को आपने पहली दफ़ा survey किया. So this next time when you go and you're doing the panel study, or second time जब आपने survey किया, maybe you found out कि out of those 20 students that you surveyed, 2 of them left the university. ठीक है, so now they have to be dropped out. Either you go and आप survey उनका conduct करें, but since they no longer will be undergraduate students, इसका मतलब वो population से ही बाहर हो रहे हैं. So that means there's a dropout rate that can be high कि आपको हर survey में same लोग नहीं मिलेंगे. All the more reasons कि जब आप third time करने जा रहे हैं तो maybe some of the students they say कि उन्होंने तीसरी दफ़ा जो है ना वो survey में they don't want to take part in it. So attrition rate is another problem जो कि panel studies में होता है.